First of all, wish all my viewers, subscribers a very happy Krishna Janmashtami. It's the day of the arrival of the Supreme Personality of Godhead. And we pray to Lord Krishna to bring all his benevolence to earth to help people who are downtrodden, who are in difficulties. And I pray for everybody to Lord Krishna at his feet. I surrender myself. How to worship Lord Krishna is enunciated in the famous shloka in the Bhagavad Gita. Tad vidhi pariprashnena sevaya updekshanti ta jnanam jnanani tattva darshanaha. It brings out the qualities of what a person should have to surrender to the benevolence of Lord Krishna and get his blessings. And which better day than the Krishna Janmashtami itself. Friends, the markets overseas are in a tailspin. If you look at the US indices, they are very much now concerned about some more rise in the interest rates, which are already quite high. It's been the fastest pace of rise in the US interest rates in several decades. And Susan Collins made the job more difficult this week by talking of the fact that the Federal Reserve, unless they understand what is the planned trajectory of inflation, they will not be able to touch or bring down or just stop raising interest rates. So they're going to look at the entire trajectory of the inflation before they come to the decision whether or not to raise, whether or not to just keep the interest rates constant and not raise them. So these comments of Susan Collins have apparently rattled the markets, and you're seeing Nasdaq consistently fall. As you all know, the discounted value of earnings of the tech companies gets impacted very strongly once you find that the interest rates are going up, and that's exactly what is disconcerting for the investors worldwide and particularly for the American markets. Indian markets so far have been resilient and have kind of decoupled from the United States and other markets. Europe faces the stagflation threat because there is rising rampant inflation, particularly in the United Kingdom. And then you also have the specter of growth falling down. So stagflation looms large over the European continent. In China, you have structural changes required. Structurally, the economy is in bad shape, and the GDP growth has come down dramatically. China has been the mainstay of the world economic growth. Over the last 10 years, 40% of the world GDP growth has come from China. Now it's stagnating. Friends, all in all, if you were to look at it, Fed has kept they may not raise this month, but they have kept a window open for one more rate hike this year. And whether they will be higher for long will be the question that will need to be answered. Friends, the reason that the Indian markets have decoupled a little bit from the West is there are certain considerations pertaining to big players taking certain positions ahead of the elections, assembly elections coming up shortly in very important states like Rajasthan, Madhya Pradesh. Now, we have tried very hard, and our research is now all ready to share it with you how this will span out over the next several months. So please do join our Premium or Premium Plus groups to get more knowledge about the Indian markets and about the US markets. You can join Prime or Prime Plus. Number to get in touch 9820861044. भाई और बहनों, जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका के बाज़ारों में कुछ नरमी दिखाई दे रही है। मुख्य कारण इसका जो है, अब ऑयल की भी कीमत बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन के फिर से लौट आने की संभावना है और काफ़ी डर है कि फेडरल रिजर्व अब तुरंत ये महीने में तो नहीं, लेकिन आगे चल के ब्याज दर फिर से बढ़ा सकता है। कच्चे तेल की कीमत भी विश्व बाज़ारों में बढ़ती जा रही है। ये और आयरन और फूड आइटम्स, बहुत सारी चीज़ों के भी भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब जो है इन्फ्लेशन सिनेरियो के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इन सब से आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनियों के कम होते जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट भी बढ़ते जाएंगे। ये सब बहुत अच्छा विश्लेषण नहीं देता, और स्वाभाविक है
इन्वेस्टर्स इससे विश्व बाज़ारों में काफ़ी सतर्क हो गए हैं। भारत में भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ इलेक्शंस आ रहे हैं, उनके कंपल्शंस की वजह से थोड़ा सा जो रंग और रूप भारतीय बाज़ार में दिख रहा है वो विश्व बाज़ारों से कुछ अलग ही है। एनीवे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये सब जो है डाइवर्जेंस जो है पूरा हो जाएगा और एक कॉन्वर्जेंस आपको जल्दी दिखाई देगा। कब होगा कॉन्वर्जेंस, ये सब जानने के लिए प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें इंडियन मार्केट्स के लिए, और अमेरिकन बाज़ारों के बारे में जानने के लिए प्राइम प्लस ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। फिर से आप सभी को कृष्ण भक्तों को भगवान कृष्ण की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप धैर्यता से और किसी के लिए कुछ अच्छा करिए कृष्ण जन्माष्टमी में। इससे बढ़ के गीता वगैरह तो पढ़िए ही, लेकिन किसी के लिए अच्छा कुछ करिए जो मजबूर है, खास करके हॉस्पिटल में या जिसके घर में देहांत हो गया है किसी का, उनके माता पिता, जाके उनके लिए कुछ ले जाइए, उनको खिलाइए, उनको थोड़ा सा उनका मन रखिए। अगर आप मेरी कोई एक बात मान लें तो आपके लिए ये सबसे बड़ी कृष्ण जन्माष्टमी में के अवसर पे, शुभ अवसर पे कृष्ण भगवान को भेंट यही होगी। बाकी तो आप करिए, उनकी आरती ज़रूर करिए, महाआरती करिए, महाप्रसाद बांटिए लोगों को। लेकिन को जो मजबूर है इस संसार में, जिनको कुछ तकलीफ़ गुजर रही है, जिनका कोई बहुत करीब का अस्पताल में है, और ख़ास करके मेरा ये बुरा नहीं मानेगा, ये वीडियो से मेरा रिक्वेस्ट है, मेडिकल प्रोफेशन के लोग मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, उन सबको है कि आप ज़रा ध्यान से देखिए। पेशेंट आ रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है, मैं दिल खोल के पहली बार जो मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं इनवाइट करना चाहता, लेकिन आप जो क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये देखिए कि कमेंसुरेट है उसके इश्यूज़, जो प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर होगा। फिर भी आप अपने तरफ से दोबारा देखिए, और कुछ नहीं तो ये कई लोगों को तकलीफ़ आ रही है, मिडिल क्लास लोग अस्पतालों में जा रहे हैं और फिर काफ़ी तकलीफ़ों का सामना पेशेंट को तो करना ही पड़ता है, पर उनके रिश्तेदारों को भी है। तो मेरी आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, जो मेडिकल प्रोफेशन है और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि आप प्लीज़ ज़रा देखिए इनके लिए क्या सहायता जो मिडिल क्लास लोग हैं कर सकते हैं, और कम से कम जो डायग्नोस्टिक्स हैं मिनिमल रख के आप उनको ट्रीट करके और जल्द से जल्द घर के लिए भेज दीजिए। ये मेरी आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी में अगर आपने ये मेरी बात मानी तो मुझसे ज़्यादा खुशी इंसान में नहीं होगी। मैं ये समझूंगा कि आपने सुनील केवल रमानी की एक छोटी सी विनती स्वीकार कर ली। आप सब लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं ये समाप्त करता हूँ। नमस्ते।